Assalam alaikum. Hi guys. Today is the first lecture of OBGYN lecture series, and today's topic is vaginal discharges. So, briefly, थोड़ा सा एक review required है. As you know कि body में different parts अपने optimum performance के लिए अपने हिसाब से उनकी pH होती है, उनका flora होता है. इसी तरह जो normal vaginal pH होती है वो slightly acidic होती है. To be specific, reproductive age में vaginal pH होती है 4.5 और वो acidic कैसे होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि वजाइना का जो नॉर्मल हेल्दी फ्लोरा है यानी कि वो माइक्रोबैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होना एक अच्छी बात है, हेल्दी वजाइना की निशानी है, उसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट जो है वो है लैक्टोबैसिलस. और भी हैं बैक्टीरिया लेकिन लैक्टोबैसिलस जो होता है सबसे प्रिडोमिनेट करता है और ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है which is why the pH is maintained at this acidic level. Vaginal epithelium is lined by stratified squamous epithelium during reproductive age and that is due to the influence of estrogen. जब मेनोपॉज हो जाता है as you know तो एस्ट्रोजन की इन्फ्लुएंस डिक्रीज हो जाती है, इसलिए एपिथेलियम में और फ्लोरा में चेंजेस आ जाते हैं. एपिथेलियम जो है वो एट्रोफिक हो जाता है एंड इट कॉजेज समथिंग कॉल्ड एज एट्रोफिक वेजिनाइटिस, जिसके ऊपर मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी. और पीएच भी कंपेयर टू बिफोर काफ़ी अल्कलाइन हो चुकी होती है. हालांकि आई नो पीएच ऑफ 7 इज़ टेक्निकली न्यूट्रल, लेकिन वजाइनल पीएच के हिसाब से इट इज़ मोर अल्कलाइन नाउ after menopause, and that is because lactobacilli are going to decrease and vagina is colonized by skin flora. So आज का टॉपिक है vaginal discharges का. सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज क्या चीज़ है. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, as the name implies, is sign of a healthy system. It's normal to have discharge. It's normal physiology. And it is the byproduct of self-cleaning process of the vagina. इसको कोई एक्सटर्नल मेथड के थ्रू क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है. हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है. हमारी बॉडी अपने आप को खुद रेगुलेट करती है, खुद ही क्लीन अप करती है. सो जो वजाइनल हाइजीन होती है वो भी हमारी बॉडी खुद ही उसका ज़िम्मा लेती है. और एक्चुअली ये जो डिस्चार्ज होता है दैट इज़ ऑल द डेब्री दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर द क्लीनिंग प्रोसेस. बेसिकली सिक्रीशंस होती हैं जो वजाइना और सर्विक्स की ग्लैंड्स बनाते हैं एंड दे कैरी अवे द डेड सेल्स एंड बैक्टीरिया. And through this process, the vagina is kept clean and it prevents against infection. Amount of discharge can vary. Some people have discharge regularly, some not so regularly, but ये कंफर्म बात है कि डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल बात है. आफ्टर सम टाइम यू मे नोटिस कि डिस्चार्ज वाइट था लेकिन इट हैज़ बिकम येलो and that is because of exposure to air which causes an oxidation reaction. Normally, physiological discharge ranges from clear to milky white depending on the phase of menstrual cycle. ये मैं आगे explain करूँगी. Discharge is more during ovulation, breastfeeding or sexual arousal. The smell can vary during pregnancy or personal hygiene neglect, and early pregnancy also accompanies increased discharge. So, थोड़ा सा menstrual cycle को और discharge को हम correlate करते हैं. तो menstrual cycle let's assume कि 28 डे साइकिल है, तो उसमें डे 1 से डे 5 तक menstruation हो रही है यानी कि periods आ रहे हैं, और फिर डे 5 से डे 10 is your pre-ovulation phase, right? अभी आपका endometrium वापस build up हो रहा है और optimize हो रहा है, it's in that process. उसके बाद आता है डे 11 से डे 16 तक, दैट इज़ योर ओव्यूलेशन फेज, और इसमें ओव्यूलेशन हो चुकी होती है एंड योर एंडोमेट्रियम इज़ मोस्ट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, राइट? दिस इज़ योर मोस्ट फर्टाइल फेज. और उसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज आ जाता है.
एंड दैट इज़ फ्रॉम डे 16 to 28, और उसके बाद दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। अब इतना ज़्यादा कोरिलेशन है फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज का मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कि पीपल इवन यूज़ दिस एज अ मेथड टू ट्रैक देयर ओव्यूलेशन। यू नो, पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, वो अपने डिस्चार्ज को ऑब्जर्व करके इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो अपने किस फेज़ में उनको ओव्यूलेशन उनकी हुई है या नहीं हुई। सो लेट्स एजुकेट आवरसेल्व्स ऑन दिस। सो प्री ओव्यूलेशन फेज़ की अगर हम बात करें, यानी कि डे 5 से डे 10 तक, तो डिस्चार्ज थिक होता है, क्लाउडी होता है और उसकी कोई ख़ास स्मेल नहीं होती। तो थिक एंड क्लाउडी इज़ द की वर्ड हियर। फिर ओव्यूलेटरी जो फेज़ होता है उसमें एग वाइट सबने देखा हुआ है, एग वाइट जैसी क्लियर और थिन कंसिस्टेंसी होती है, अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वेरी कोपियस। एंड इसका एक लॉजिक ये है कि इस तरह के डिस्चार्ज में से पैसेज ऑफ स्पर्म इज मच ईजियर इनटू द फीमेल ट्रैक्ट, राइट? एंड ऑब्वियसली लाइक आई मेंशन्ड, ओव्यूलेटरी फेज में द वुमन इज मोस्ट फर्टाइल, राइट? तो हर चीज़ फर्टिलिटी को ऑप्टिमाइज कर रही होती है, इवन टू द लेवल ऑफ डिस्चार्ज। उसके बाद फ्रॉम डे 16 to 28 विच इज़ पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, एस्ट्रोजन लेवल डिक्लाइन हो रहा होता है और प्रोजेस्टेरॉन की डोमिनेशन हो रही होती है। इस फेज में डिस्चार्ज थिक होता है और वाइट होता है, ठीक है? और इमीडिएटली पीरियड से जस्ट पहले, कि आपको पता है कि पीरियड्स आने ही वाले हैं 1-2 दिन में, तो तब डिस्चार्ज थिक ब्राउनिश हो सकता है, क्योंकि इसमें ब्लड और डिस्चार्ज मिक्स हुआ होता है। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान में कहीं पे इस तरह का डिस्चार्ज ब्राउन या ब्लड टिंज्ड हो तो वो नॉर्मल बात नहीं है, विल टॉक अबाउट दैट इन अनदर वीडियो। लेकिन इमीडिएटली बिफोर पीरियड्स थिक ब्राउनिश डिस्चार्ज इज नॉर्मल। नाउ, अब आपको अगर ये नॉर्मल बात समझ आ गई है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो पेशेंट्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, COCP जिसको कहते हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होती है। तो आपके जो नॉर्मल बॉडी के राइज एंड फॉल होते हैं हार्मोन्स के, ऑब्वियसली दे आर अफेक्टेड दिस वे, राइट? तो इन लोगों का थ्रू आउट देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल रेज्ड होते हैं। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं वो साइक्लिकल वेरिएशन नहीं शो करते इन द फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज लाइक आई डिस्कस्ड अबव। Now that you have a fair understanding of what a normal discharge is, abnormal discharge is something that is not the normal, right? तो अगर वजाइना का फ्लोरा या उसकी पीएच चेंज हो जाए, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे होगा, तो डिस्चार्ज की स्मेल भी वेरी कर सकती है, कलर भी कर सकता है, टेक्सचर भी कर सकते हैं, एंड दैट इज एबनॉर्मल। तो ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज में इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज होती हैं। इन्फेक्शियस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं, और एक और कैटेगरी है पेल्विक इन्फेक्शंस आफ्टर सर्जरी। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर, मेन फोकस जो है ये पहली 2 हेडिंग्स पे ही रहेगा। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में pelvic inflammatory disease, diabetes, कुछ medications, antibiotics, steroids, foreign body जैसे कि retained tampon, condom और postpartum swab, ये चीज़ें अगर अंदर रह जाएं तो they are going to cause a change in flora, infection हो जाएगी। उसके अलावा malignancy of any part of the genital tract, atrophic vaginitis, cervical ectropion, fistula, urinary or fecal, or allergic reactions to different products. So, अब this is a really useful table. अगर आपको ये मेमोराइज हो जाए तो this will be really helpful to you. तो इसमें पहले कॉलम में अगर आप देखें तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ डिस्चार्ज, राइट, बेस्ड ऑन द कलर एंड टेक्सचर। तो और अगले कॉलम में है कि इसका प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, और थर्ड एंड फाइनल कॉलम के अंदर कुछ सिम्टम्स होंगे which may or may not be present. So the first discharge is mucopurulent, right? Mucus-like and purulent. तो वो common होता है in pelvic inflammatory disease और tuberculosis. Then there's mucopurulent with contact bleed, and that is common with chlamydia. Pink discharge is more common in the पोस्ट चाइल्ड बर्थ फेज। वो जो डिस्चार्ज होता है बेबी के पैदा होने के बाद उसको लोकिया कहते हैं,
वो पिंक हो सकता है। उसके अलावा ब्लड और ब्राउन डिस्चार्ज कैन बी अ साइन ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको स्पॉटिंग कहेंगे, और सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है ये। इन चीज़ों के साथ अदर सिम्टम्स कैन बी एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग और pelvic pain. Then there's cloudy or yellow discharge. Now this is a different one, right? येलो और ग्रीन ऐसे रंग हैं कि ये तो बिल्कुल अलार्म बेल्स रिंग करते हैं ना, ये नॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो सकते। तो क्लाउडी और येलो यूजुअली डायग्नोसिस गोनोरिया की तरफ जाता है। इसमें ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी अक्सर होती है। Then there's frothy yellow or green discharge with a bad smell, and that's trichomoniasis. And उसके साथ pain and itching while urinating भी हो सकता है. Sorry, with urinating. Then there's thick, white, and cheesy discharge. It's literally looking like yogurt-like textures, को curd-like discharge भी कहते हैं, and that's common with yeast infections. Then there's swelling and pain around vulva, itching, and painful intercourse. Finally, white, gray, or yellow with fishy smell. This fishy smell is the key word here. That's in bacterial vaginosis. I will describe that later. उसमें भी itching और burning होती है, redness and swelling around vagina or vulva. So, as you know, कि एक डॉक्टर का sequence of patient interaction that starts with history taking. So there's history taking, examination, and then you have your differentials and investigations, and then your management. So history तो आपने मुकम्मल ही लेनी है, लेकिन highlighted points मैं यहाँ पे mention कर रही हूँ. So the first thing you should ask is characteristic क्या है, किस तरह का डिस्चार्ज है, उसका कलर क्या है, उसकी कोई ख़ास स्मेल तो नहीं है, कब से आ रहा है और कब से है। उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, ख़ारिश तो नहीं होती, बर्निंग तो नहीं होती, पेशाब में जलन तो नहीं होती विच इज़ डिस्यूरिया, सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया, पेनफुल इंटरकोर्स और pelvic pain. Then there's relationship of discharge to menstrual cycle. Always correlate this. उसके बाद precipitating factors. Is the patient pregnant? Is the patient taking contraceptive pills? Sexual arousal के वक्त ये discharge तो ज़्यादा नहीं होता. Then there's sexual history. Risk factors for sexual transmitted disease. Medical history. Is the patient diabetic or compromised in some way immunologically? Non-infectious causes क्या है, कोई foreign body, ectopy, malignancy, dermatological condition तो नहीं है. Hygiene practices क्या है, क्या वो पेशेंट खुद से सेल्फ क्लीनिंग तो नहीं अटेम्प्ट करती है थ्रू douches और bath products और talcum powder तो नहीं यूज़ करते, एलर्जी तो नहीं है किसी फैब्रिक से, क्रीम से, लोशन से, सोप से. डू पे अटेंशन. ये भी सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन समटाइम्स दिस इज़ द रियल कल्प्रिट, यू नो. सो देन देयर इज एग्जामिनेशन. ऑब्वियसली सबसे पहले एक्सटर्नल जेनेटिलिया को इंस्पेक्ट करते हैं. इंस्पेक्शन में एज यू कैन सी पहली तस्वीर में हमें वल्वा नज़र आ रहा है, तो एक ओवरव्यू ले लें. जनरली अगर कैंडिडियासिस हो या बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो तो वल्वा रेड हुआ होता है. देयर इज रेडनेस, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्वेलिंग, देयर माइट बी फिजरिंग एंड समटाइम्स डिस्चार्ज वहाँ पे भी लगा होता है, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर आवरसेल्फ. तो चेक फॉर वल्वाइटिस, ऑब्वियस डिस्चार्ज, अल्सर्स और अदर लीजन्स. फिर आ जाता है आपका speculum examination. So if it is indicated, if the patient is eligible for this exam, you perform a speculum exam. और इसमें आप clearly vaginal appearance देखते हैं, cervix देखते हैं, कोई foreign body, amount, color, consistency of discharge क्या है, यहाँ पे बहुत clearly नज़र आ जाता है. Then finally by manual examination, this is done if it is indicated. Then there's investigations. ऑब्वियसली आपको अपनी हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन से जो आपके ज़हन में एक डायग्नोसिस डिफरेंशियल बन रहा है उस हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं. दिस इज़ जस्ट अ जनरलाइज्ड लिस्ट. सो एंडोसर्वाइकल और वल्वोवेजाइनल स्वाब्स फॉर गोनोरिया एंड क्लैमिडिया. हाई वेजाइनल स्वाब, ये जो पहली दो तस्वीरें हैं ये हाई वेजाइनल स्वाब को डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं. Then there's vaginal pH measurement, that's sometimes helpful. And then there's saline wet mound and gram staining, colposcopy if abnormal appearance of cervix. Diagnosis. So take a good detailed history.
And after asking all these important questions like when did it begin, what is the color, any smell, itching, pain, or burning, single sexual partner or multiple, please ask this considerately. Use of creams, condoms, recent medications, comorbid conditions. And then, based on all of what you have gathered, you are going to formulate the treatment. This is not a detailed lecture. I'm just briefly mentioning for you to really get the hang of it. So, for example, अगर आपको समझ आती है कि पेशेंट की कर्ड लाइक वाइट चीज़ी किस्म का डिस्चार्ज है और वल्वा भी इन्फ्लेम्ड है, तो इट्स मोस्ट लाइकली यीस्ट इन्फेक्शन, and that's treated with antifungal medications जो कि internal application होती है उनकी in the form of cream or gel such as clotrimazole or canesten. Then there's for example bacterial vaginosis जिसमें flora alter हुआ होता है, so that is treated with antibiotic pills or creams. Then trichomoniasis is treated with metronidazole. So दिस इज़ अ जनरल ट्रीटमेंट स्लाइड. अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँगी तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर दीज इन्फेक्शंस, चेक दैट आउट. सो प्रिवेंशन ये है कि मेंटेन गुड हाइजीन. There are people who are somehow obsessed with cleaning themselves, and they use these weird products and they kind of make things worse because ये products जो होते हैं vaginal pH को डिस्टर्ब करते हैं, और जब वो फ्लोरा और वो pH डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर दैट मेक्स रूम फॉर एबनॉर्मल फ्लोरा एंड दैट कॉजेज इश्यूज. सो प्लीज़ अपने हर पेशेंट को काउंसिल करें कि आपको कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है. आवर बॉडी नोज हाउ टू क्लीन इटसेल्फ. So avoid these feminine sprays and bubble baths. Safe sex practice करें. This is relevant for sexually transmitted infections. So barrier method होना चाहिए. So and generally like अच्छी optimum health होनी चाहिए. Eat well, sleep well, stay hydrated, and use medications as long as directed. So yeah, that was it for our first video on vaginal discharges. If you like my video, please like, comment, share, and subscribe, and follow me on my social media. And I will see you in the next one. Bye.